Class, our today's new topic is radiation. Radiation is the process of heat transfer in which heat directly passes from one body at higher temperature to another body at lower temperature, but it's very important when temperature comes from higher temperature to lower temperature body at that time without affecting medium. It means we don't need any medium for radiation. Suppose class, this is your object A and this is your object B, and heat transfer from A to B, but in radiation we don't need medium. In conduction and in convection you need molecules by which you can transfer the heat, but for radiation there is no need of any this kind of medium, so we don't need any medium for radiation. And the examples are, when we sit in the sun we feel warm. So class, we all know from sun to earth there is a vacuum because atmosphere is very limited around the earth, rest of the part is vacuum. So when heat, or we can say light, comes from sun, the heat is also comes from sun and we feel that heat in earth. So in this vacuum this heat is traveled. So class, this heat can come without medium. So by radiation this heat can come from sun to earth. The same example are here. When we sit near a fire we feel warm. Similarly, if we keep our hands below a lighted bulb, our hands feels warm. So class, it's not necessary that you have to put your hand above the bulb, because you all know because of heat maybe the air molecules are heated here, so they goes upwards. But class, if you put your hands here also in the bulb or downwards in the bulb, you can feel the same kind of heat. So what is the meaning of that? You can feel the heat here and here just because of radiation. So we do not get heat by convection also, because hot air always rises up, it does not move sidewise or downwards. But still, if we feel hot here in the side or in the downwards, it means the process is radiation. Heat radiations are also called thermal radiation or simply radiation. So as I told you earlier, sunlight किस तरह से अर्थ में आती है, तो क्लास ये जो लाइट होती है इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब ये लाइट अर्थ पर आती है क्लास तो इसी स्पीड से ये लाइट भी और हमारा रेडिएशन जिसके थ्रू हमें हीट मिलती है, इसकी भी स्पीड यही होती है जो लाइट की स्पीड होती है. सो द स्पीड ऑफ रेडिएशन इज सिमिलर एज लाइट. सो द स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड है. When radiation fell on the body absorbs some of them and reflect the rest. The body becomes warm because of the absorbed radiations. Different substance absorb different amount of radiations. So class, when radiation fall on the body absorbs some of them and reflect the rest. तो अगर ये बॉडी रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रही है तो ये कम गर्म होगी, और अगर ये रिफ्लेक्ट कम कर रही है क्लास तो ये ज़्यादा हॉट होगी. सो इट मीन्स आप किसी भी बॉडी की हॉटनेस इससे पता लगा सकते हैं कि उसने रेडिएशन ज़्यादा किया है या कम. सो अगर मैं ब्लैक कलर की बात करूं क्लास, सो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को और रिफ्लेक्ट कम करता है, इसलिए ब्लैक कलर जल्दी गर्म होता है कंपेयर टू वाइट. अगर मैं वाइट कलर की बात करूं सो ये रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करता है क्लास, एब्जॉर्ब कम करता है, इसलिए वाइट कलर के कपड़े जब हम गर्मियों में पहनते हैं तो हमें कम गर्मी लगती है, जबकि ब्लैक कलर की अगर हम कपड़े गर्मियों में पहने तो हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, ये कपड़ा जल्दी गर्म होता है. सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द ब्लैक एंड द डल सरफेस एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट लेस रेडिएशन. The white and the shiny surface reflects more radiation and absorb less radiation. इसीलिए क्लास हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि वो रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करता है और हमें गर्मी कम महसूस होती है. नाउ क्लास, सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट सर्फेसेज आर गिवन बिलो. वी प्रीफर टू वेयर वाइट क्लॉथ्स इन समर. द रीज़न इज दैट I told you the reason.
cloths reflect most of the sun's heat and absorb very little of it, so thus they keep our body cool. Second, we prefer to wear black and dark colored clothes in winter. The reason is that black or dark colored, I told you earlier, absorb most of the sun's heat and keep our body warm. The bottom part of cooking utensils or pan is painted black because you all know black is a good absorber of heat. So by this, black color absorbs most of the heat and our food cook early. So utensils or pan get cooked rapidly of its bottom part is painted black. Room heaters are provided with shiny reflectors. It's very important class. Room heaters have shiny reflectors because the shiny surface absorbs very little heat and reflects most of it, and so almost the entire heat produced by the filament or heater is reflected, by which we can take it very easily. Class, our next topic is thermos flask. The thermos flask is a special kind of flask or bottle. It is used to keep a hot liquid hot and cold liquid cold for a long time. So this is the thermos flask class, and understand the basic concept of thermos flask. So class, this is the structure of thermos flask, and it's very important. There are two walls, and in between two walls there is a vacuum in between two walls. Understand? So this is your vacuum between two walls. Number second is this red part is silvering. Silver coating is in this part and silver coating in this part also. क्लास, ये जो बोतल का आउटर पार्ट है इसमें आपका जो इनर वाला पार्ट होता है इसको सिल्वर पेंट किया हुआ है, जबकि जो आपका अंदर वाला सेकेंड वॉल है, अंदर वाली वॉल है, इसमें बाहर वाली वॉल को सिल्वर पेंट किया गया है। और इसका रीज़न ये है क्लास, आपको क्लास रेडिएशन के बारे में पता है कि रेडिएशन सिल्वर पेंट से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर कोई बाहर से हीट आती है तो अगर वो यहाँ से अंदर चली भी जाए तो इस सिल्वर पेंट के कारण रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर आपका हॉट ऑब्जेक्ट कोई अंदर है और उसकी हीट बाहर आती है क्लास, तो यहाँ से अगर वो बाहर आ भी जाए तो इस सिल्वर पेंट के कारण वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इसका मतलब क्लास आपकी हीट ना बाहर से अंदर जा पा रही है ना अंदर से बाहर। सो आपकी ये वॉल्स तो हीट प्रोटेक्टर का काम कर रही हैं। बट अगर मैं बात करूं अपर पार्ट की, सो यहाँ पर क्लास कॉर्क लगा होता है और इस कॉर्क से ये एक एयर टाइट कॉर्क होता है। इस एयर टाइट कॉर्क के कारण क्लास आपका हीट बाहर नहीं जा पाता और बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाता है। सो क्लास, देयर इज अ वैक्यूम इन बिटवीन द वॉल्स. बोथ द वॉल्स आर मेड शाइनी ऑन वैक्यूम साइड. The mouth of the bottle is fitted with a cork or plastic stopper like this. The bottle is enclosed in the plastic case with the help of cork pieces or spring as shock absorber. So class, shock absorber के लिए यहाँ पर इस तरह की स्प्रिंग लगाई होती है कि ये जरा भी ढीला ना हो पाए. It should be airtight all the time. The vacuum in between the walls of the bottle prevents any transfer of heat by conduction and convection. I told you earlier, by conduction and convection आपकी heat transfer होती है, but because of this vacuum it's not possible that your heat can go outside or come inside just because of the vacuum. And आपको एक बात पता है क्लास की वैक्यूम में सिर्फ थ्रू रेडिएशन आपकी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है. तो रेडिएशन से बचने के लिए आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम इसमें सिल्वर पेंट कर देते हैं. सो द वॉल रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन जस्ट बिकॉज द शाइनिंग सरफेस ऑन द आउटर साइड ऑफ द इनर वॉल एंड इनर साइड ऑफ द आउटर वॉल रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन. सो क्लास, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो सिल्वर पेंट किया होता है ये रेडिएशन के थ्रू हीट बाहर न जाए, इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर सिल्वर पेंट किया होता है, क्योंकि सिर्फ रेडिएशन से ही वैक्यूम में हीट इधर से उधर जा पाती है. कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है. सो क्लास, अगर रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होती भी है तो वो इस सिल्वर पेंट के कारण से, इन शाइनी सरफेसेस के कारण से रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही रहती है
Thus, the transfer of heat either from inside to outside or from outside to inside is very little, and the content of the bottle can remain at the same temperature for long time. So class, in this bottle, through conduction, through convection and through radiation, heat cannot be transferred from outer part to inner part or inner part to outer part. So the temperature of the liquid remains same inside this bottle.